अगर देखें, एक कॉन्सेप्ट है मुनाफिक का कॉन्सेप्ट। मुनाफिक काफिर से बुरा होता है मेरे हिसाब से। काफिर को तो पता नहीं रोशनी उस है नहीं, काफिर कुफर का मतलब है खिलाफ, ठीक है, उसको पता नहीं। मुनाफिक को पता होके करता है। अपने ऊपर क्यों नहीं कंडीशन डाल दी है कि आई विल नॉट बी नॉन प्रॉफिलिगेट अमीन वगैरह। ये चीजें पिक एंड चूज करना, किसी को उठाना, किसी को फिट करना, ये बातें अब व्हाई यू नॉट अटेंडिंग द लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट? यू आर ट्रीटिंग दिस एज अ सिविल सूट। यू आर सेइंग अ डिस्क्वालिफिकेशन बाय मिलिट्री डिक्टेटर, a rapist can contest elections, but a person who makes a mistake, उसमें ये भी लिखा है कि कितने तोले सोना आपके पास है, ठीक है, आपने 6 लिख दिया, मालूम आपके पास 8 थे, तो यू आर डिस्क्वालिफाइड। आप आज हमारे सामने खड़े हुए हैं, हम आपको होल्ड करते हैं कि बुरा ना माने कि यू आर अ प्रॉफिलिगेट, यू वेस्टेड द टाइम ऑफ द कोर्ट। कल आप इलेक्शन में तक नॉमिनेशन पेपर आएंगे, आप कहेंगे देखिए ये जजमेंट लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट, ही इज डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ टू बी अ प्रॉफिलिगेट, ही वेस्टेड द टाइम ऑफ द कोर्ट, यू आर डिस्क्वालिफाइड। सो let's not forget small things. We start focusing on small things. Look at the larger picture. Look at the context in which these amendments were brought into the constitution. Look at article 225. उसको आपने totally नजरअंदाज कर दिया है, except you're not even saying a word about article 225. It says no court shall. वहाँ आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट नो कोर्ट में नहीं आएगा डेफिनेशन में, यहाँ कोर्ट में आ जाएगा। तो ये आप जरा टोटलिटी में बात कीजिए। Let me submit. I was referring to, if you look at the amendments, 62(1)(f) was amended in. First one, is it a good amendment? It was amended. I'm asking your opinion. I'm talking about 18th amendment. I'm asking your opinion. 85 not good amendment, but 62(1)(f) is good. I'm talking about 18th amendment. क्या उसको छोड़ दीजिए, अमेंडमेंट भी तो गन पॉइंट्स पे हुए हैं, क्या बातें कर रहे हैं? वो लोगों ने कहा कि चलिए आधी जमहूरियत आ जाए पूरी से तो बेहतर है। अब प्लीज आप देखें ना, मिलिट्री डिक्टेटर्स के सामने आप लोग कोई बात ही नहीं करते हैं। आप सवाल का जवाब दें, खुद में फिर जो कहना चाहते कहें, जो सवाल का जवाब आप कर लो। I agree with you. I am against dictatorship. I am for the constitution. Reflect this in your arguments. What I am submitting is, when they amended and added a law, court of law, declaration by court of law in 62. At the same time, they added 10A. ये तो पार्लियामेंट ने किया, ये भी पार्लियामेंट ने किया 18th amendment में। 18th amendment is a validation. Please don't equate it with amendment thought out by the parliamentarians. जितनी भी आप उनको हकारत की नजर से देखेंगे, वो हमारे elected representative होते हैं, ठीक है, उनकी cumulative wisdom है। Surely it prevails over the wisdom of a military dictator. My lord. So why are you disregarding the wisdom? Why is the constitution being just, if it's a dictator, we cannot touch it? ये नहीं करें ना, आप मजीद पॉइंट आर्ग्यू करें। I am submitting my arguments on the basis. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट बताएं, क्योंकि you're not making headway now. You stopped. My lord, my next point is that when they brought in amendment in section 232 of the Election Act, during the parliamentary debate, it was admitted that Article 62(1)(f) is silent regarding period of disqualification. I have appended a copy of Senate's proceedings, which says, we don't need to. It's obvious it's silent. It's silent. Yes. Now my submission is, once they have admitted that it's silent, they have to bring in constitutional amendment. So let's put it another way. My lord. Suppose we say 232 is not good law. My lord. And we also hold that judgment of the Supreme Court is also not good law. My lord. Then there is no disqualification at all, not even for a day. My lord. Yes? Yes. Then they have to amend. So you say the wisdom of 5 gentlemen sitting in this courtroom overpowers the wisdom of 326 parliamentarians sitting on in the next building. For what reason? Give us a reason. Give us some logical reason. I mean, just because it said so. That's all. Parliament had the power to fix 5 years in Article 62(1)(f), बात ही समझ but रहे they did not. अच्छा, चले आगे बढ़े ना, थोड़ा डिबेट को आगे ले चलें।
देखिए अगर इंटेंशन होती लेजिस्लेचर की, वकील साहब, अगर लेजिस्लेचर की इंटेंशन होती कि कोई सज़ा होनी चाहिए, जैसे 63 में बताया गया कि अगर किसी भी ऑफेंस में कन्विक्शन हो, कन्विक्शन पूरी होने के, सेंटेंस पूरी होने के बाद 5 years और 3 मुख्तलिफ बताए, 5 years 3 years, उन्होंने पीरियड बता दिया। तो क्या इनका इंटेंशन नहीं था कि यहाँ पे पीरियड ना बताने का, सिंपली इट इज if they had the number and the intention, they would have expressly mentioned it in 62(1)(f), like they did it. Why not we should consider it as positive कि इसके कोई सजा ही नहीं है, तो कह दिया कि फलां शख्स झूठा है, बस दैट्स ऑल। या प्रिज्यूम किया जाए हर शख्स सच्चा है अनलेस प्रूफ टू द कंट्री, ये अल्फाज भी लिखे हैं, हर शख्स। इफ यू लुक, क्यों प्रिज्यूम करें कि वो झूठा है जब तक वो साबित repeat yourself, I didn't understand. Article 63 has given 3 different periods of. No, I can just pose you a question. If in Samiullah Baloch, I'm writing now the judgment of Samiullah Baloch, imagine it, and I say that 62(1)(f) does not prescribe the period of disqualification. However, I will see the other provisions of the Constitution and say that since for treason it's only 5 years disqualification, I think this is a lesser crime and I put 2 years. Suppose it would be as valid a judgment as Samiullah Baloch, correct? For no logical reasoning, it is what I decide. I have to base my decision, a constitutional interpretation, on some logic. Either you should say I would be wrong in saying 2 years because you just picked out a number from your head. It could be 3, it could be 4, it could be lifetime. Please address this query. There could be only 2 possibilities. No, why not 2 years? I write Samiullah Baloch and say 2 years. It's not written there. Exactly. So it's all up to do with my mind. But it's nothing to do with the Constitution. It's not written otherwise as well. चलिए मगर ये आप इसको अटेंड करें ना इस बात को. If it's silent, that means understood your point. Until it's in field. चलिए अगला point जब हम किसी और से पूछें. This larger bench can revisit its own judgment. This larger bench can revisit its own judgment. Reinterpret